Okay, Kunta, start the prayer. Prayer. Lord of all power and might, give me wisdom and understanding today. Let me grow in knowledge and bear fruit in active goodness. Strengthen me with ample power to meet whatever comes with fortitude, patience, and joy, and to give thanks to you in all things. Amen. Okay, so today we will discuss about the ecosystem. Okay, energy flow in an ecosystem. Then we are having the food chain and food web. Okay, and we will discuss the different type of food chain and food web. Okay, so now first of all, energy flow in an ecosystem. Excuse me, Yes, yes, yes. Say, ma'am. So he said, we have to submit dear, your voice is not clear. Ma'am, on Thursday we will be submitting all the practical files of all our subjects. Yes, yes, of all the subjects. Okay. So, ma'am, Arpita, your voice is not clear. Talk to me later. Okay. Okay. ma'am, let Guntaz ask. Ma'am, she has also the same question. Yes, dear, you have to submit all the file in one day only. This you are asking, na? No, ma'am, I'm asking about the project file. Ma'am, जो bio की है. No, you don't have any मैम वो project. GMO वाला प्रोजेक्ट फाइल वो हमने लिखना है अभी और सबमिट भी करना है. Dear, that you have made already. You have made. Okay, just wait. I will tell you. I'm starting the मैम class. Okay, I'm starting the class. Okay, that that I will tell you later on. Okay, so now you are having energy flow in ecosystem. Okay, screen is visible. Yes, screen is visible. Yes, ma'am. Okay, so उसने क्या sun is the only source of energy of all the ecosystem on earth except deep sea hydrothermal जो ecosystem है. Okay, तो that you know कि sun is the only source of energy for all the ecosystem. उसने कहा primary source of energy is the radiant energy of sun. Okay, so उसने कहा all the total incident solar energy less than 50% is photosynthetically active radiation. So उसने कहा जितनी भी total solar radiation है उसमें से less than 50% जो है that is available for the उसने कहा that is photosynthetically active radiation. And out of that plants उसने कहा utilize only 2 to 10% of photosynthetically active radiation to sustain the entire living world. मीन्स कि उसने कहा है कि टोटल जो सोलर रेडिएशन है उसमें nearly 8% of light energy falls on the plant. Okay, and approximately 55 to 60% of solar energy जो है is absorbed in the atmosphere and 35% of it is used in heating the water and land. And just remember, only 1.5% of the light, only 1.5% of the light जो है falling on the plant is trapped by the producers in the presence of magnesium containing green pigment called chlorophyll. Okay, so this is important that you have to remember because only about 1.5% of the light falling on the plant is trapped by the producers in the presence of magnesium containing green pigment chlorophyll and is used in assimilating the organic food called glucose by the process of photosynthesis. Okay, so उसमें plants as well as the photosynthetic and chemosynthetic bacteria fix sun's radiated energy to make food from the simple inorganic molecule that you already know कि plants और जो भी हमारे green pigment containing chlorophyll green algae होती हैं और जो chemosynthetic bacteria होते हैं वो सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. Thus, all organisms are dependent on producer either directly or indirectly for their food. Okay, this topic is very very simple. Now उसने कहा the flow of energy is unidirectional that you already know कि it flows from the sun to producer and then to consumer and thus maintain the first law of thermodynamics. Okay, उसने कहा कि जो flow of energy जो है that is unidirectional. Okay, that you already know कि जो energy जो है flow करती है from the producers
then to consumer, और maintain करता है, that is the first law of thermodynamic, that energy can neither be created nor be destroyed, it only conserve, it only transform from one form to another. Okay, so this is all about the energy flow in an ecosystem. Okay, so there's a law, 10% law, that we will study later on about the energy flow in an ecosystem. Okay, first of all, you are having the food chain. Now food chain and food web topics are very very simple, but you have to study the different type of food chain. Simple food chain, complex food chain है, grazing food chain है, detritus food chain है, then you have to make the different type of food webs. Okay, so उसने कहा first of all, what is a food chain? The transfer of energy from green plants through a sequence of organism in which in which each eats the one below it in the chain, and it is eaten by the one above, is called as a food chain. Okay, so food chain is very very simple, you have already studied in class 10th also, but in this you have to learn more and more food chain, like pond ecosystem में food chain है, grassland ecosystem में है, aquatic ecosystem में है. So you have to study the different type of food chain, otherwise it is a very simple topic, that it is a series of, or you can say, you can also define it in a way that it is a series of group of organism called trophic level. Okay, it is a series of group of organisms called trophic levels, in which there is a repeated eating and eaten by, so as to transmit the food energy. Okay, series of group of organism series है groups of organism का, in which there is repeated eating and eaten by, so as to transmit the food energy. Okay, तो अब उसने क्या है, food chain की different characteristics हैं. In a food chain there is a repeated eating, that you know, in which each group eats the smaller one and is eaten by the larger one. जिसमें each group जो है smaller one को खाता है and that organism is eaten by the larger one. So उसने कहा is a food chain involve a nutritive interaction between the biotic component of an ecosystem. Then उसने कहा food plant and animal which depend successively on one another forms the limb of a food chain. उसने कहा plants और animal जो एक दूसरे पे depend है forms the limbs of the food chain. Then you have to write the different characteristics. Then the other characteristics of food chain is there is a unidirectional flow of energy from sun to producer and then to series of consumers. sun से producers में और फिर series of consumers में of various types. And usually 80 to 90% of potential energy is lost as heat at each transfer on the basis of second law of thermodynamics. Okay, so this is important कि 80 to 90% जो energy है वो lost होती है at each transfer. Okay, on the basis of the second law of thermodynamics. Okay, what is the meaning of second law of thermodynamics? Okay, you know कि second law of thermodynamics states that spontaneous transformation of energy into potential energy is not 10%. Okay, this is the, you are having जो food chain है दो laws follow करती है, first law of thermodynamics and the second law of thermodynamics. What is the first law of thermodynamics? That energy is neither created nor destroyed but may be transformed from one form to another. Like photosynthesis में solar energy is transformed into chemical energy. Okay, this is the example. Then you are having the second law of thermodynamics जिसमें कहता है it states that spontaneous transformation of energy into potential energy is not 100%. Okay, तो हर एक जो लेवल में जो एनर्जी है सिर्फ 80 to 90% जो एनर्जी है वो लॉस्ट होती है एज हीट ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन. ओके, सो दिस इज द टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो फूड चेन फॉलो करता है. And other characteristics is that a food chain is always straight and proceed in a processing straight line. Food chain हमेशा क्या होती है, straight होती है and always proceeds in a processing straight line. And other characteristics in a food chain, number of consumer which can be supported by the producer depend upon the length of the food chain. उसका number of consumer which can be supported by the producer वो किस पे depend करता है, depend upon the length of the food chain. Okay, and some organism may occupy different trophic position in different food chain and so form a link in more than one food chain. उसने कहा कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन डिफरेंट फूड चेन. दिस इज इम्पोर्टेंट कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं हर एक फूड चेन में उनका जो लेवल है, सपोज किसी में फर्स्ट सेकंड ट्रॉपिक लेवल होगा, किसी में उसका थर्ड ट्रॉपिक लेवल भी हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल. तो उसने कहा सम ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन डिफरेंट फूड चेन एंड सो फॉर्म अ लिंक इन मोर देन वन फूड चेन. For example, man as primary consumer, okay, when eats the grain. Man जो है primary consumer है जब वो eat
when eats the grain. सेकेंडरी कंज्यूमर है व्हेन इट ईट्स हर्बीवरीज, जब वो हर्बीवोर्स को खाता है, रैबिट को, शिप को, गोट को. और मैन ही क्वाटनरी कंज्यूमर है व्हेन इट ईट्स द लार्ज प्रेडेटरी फिश. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि उसने कहा है कि some organism may occupy different position in different food chain, okay, and so form a link in more than one food chain. जैसे man की example है as primary consumer when eats the grain, secondary consumer when it eats the herbivories like rabbit, sheep and goat, and man is a quaternary consumer when he eats the large predatory fish. Okay, so this is a food chain and these are the general characteristics features of food chain. कि food chain में repeated eating होती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है, 80 to 90% पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है हर एक टॉपिक लेवल में. देन फूड चेन ऑलवेज स्ट्रेट होती है, प्रोसीड इन ए progressing straight line, and it follows the two laws of thermodynamics. These are the important characteristics of food chain. One more is there, some organisms are omnivores and may occupy more than one trophic level in the फूड चेन. जो आपके ओमनिवोर्स होते हैं उसने कहा है एक से ज्यादा टॉपिक लेवल जो है ऑक्युपाई कर सकते हैं फूड चेन के अंदर. ओके, सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फूड चेन. नाउ वी आर हैविंग द टू टाइप ऑफ फूड चेन, द ग्रेजिंग फूड चेन एंड द detritus food chain. Okay, so you can see in the picture the grazing food chain. What is the meaning of grazing food chain? It begins with the producer which capture the solar energy and feed the energy into the food chain through photosynthesis. जो आपकी grazing food chain है उसने कहा these are directly dependent upon solar radiation. grazing food chain में means कि producers कौन से हैं grazing food chain में? green plants. Okay, so in grazing food chain green plants forms the first trophic level of the food chain. They synthesize their plant biomass by the process of photosynthesis. So food chain transfer material energy through organism in the ecosystem. Herbivores इसमें primary consumers होते हैं and then herbivores are eaten by the carnivores which are of different category. Carnivores जो है different category के हो सकते हैं and decomposer form the last trophic level of grazing food chain. So this is important कि what is the grazing food chain? Grazing food chain start होता है producer से. So green plants or the producers forms the first trophic level of food chain and decomposers forms the last trophic level of grazing food chain. Okay, then next you are having the detritus food chain. It begins with the dead organic matter and is made up of decomposer which are heterotrophic organism, mainly fungi and bacteria. Okay, so grazing food chain जो है grazing food chain start होती है प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ detritus फूड चेन में है ऑर्गेनिक मैटर का detritus. ओके, सो दिस इज मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रेजिंग फूड चेन एंड द detritus फूड चेन. ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर्स एंड detritus फूड चेन है फूड चेन इज उसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है या फर्स्ट टॉपिक लेवल है वो है detritus. Okay, what is detritus? Detritus is the dead organic matter and main source of dead organic matter are fallen leaves or dead animal bodies. So detritus food chain जो है वो start होती है dead organic matter जैसे dead leaves and dead animal bodies हैं वहाँ से start होती है हमारी second वाली detritus food chain. So it begins with dead organic matter and is made up of decomposers which are heterotrophic organism mainly fungi and bacteria. And primary consumers में आ जाएंगे detritivores. ओके जो भी प्रोटोजोन्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं विच फीड अपॉन द डिट्राइटस सैप्रोफिटिकली जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं. और देन डिट्राइटिवोर्स हैं इन टर्न आर ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं which include insect larvae, nematodes, etc. But important thing is that grazing food chain starts with the producer and detritus food chain start with the detritus. Detritus is the dead organic matter. Dead organic matter mean dead leaves or dead animal bodies. Okay, and decomposer secrete. अब इसका जो decomposers हैं okay it secrete digestive enzyme that break down dead and waste matter into simple organic matter which are later absorbed by them. Okay, so one example is given there, dead leaves producers
उनको फिर खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर है वुडलोज, एलाउस एंड द ब्लैक बर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स इसमें। सो दिस इज द एग्जांपल। ओके, so we are having the two type of food chain, that is the detritus food chain and the grazing food chain. अब detritus food chain जो है वो predatory food chain भी हो सकती है। ओके, दी स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स मीन्स जिसमें predatory भी हो सकती है, इट कैन बी parasitic also। ओके, जो detritus food chain है, sorry, grazing food chain, grazing food chain is can be of two type, the predatory food chain and the parasitic food chain। Okay, so then you are having the important examples of food chain। Okay, you can see in the picture grass, grasshopper, frog, snake, falcon, these are the important example। ये बिल्कुल simple और सबसे important example है food chain की, जिसमें producers जो हैं, grass जो है वो producer है, primary consumer is the grasshopper and then secondary consumer is the frog, tertiary consumer is the snake and quaternary और top consumer जो है that is the falcon। Okay, word जो है। So this is the simplest type of food chain। Okay, then you are having the food web, food chain। तो food chain is very very simple। then you are having the food chain, उन्हीं food chains को मिला के फिर आपकी food chain बने, food web बनेगी। तो उसने कहा it is a network of food chain which become interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connections amongst different organism of a biotic community। okay, तो उसने कहा food web जो है, food web के अंदर what is a food web, it is a network of food chain। so you can simply you can say कि food, what is a food web, it is a network of food chains, it is a network of different food chains which become interconnected at various trophic level, जो different trophic levels में आपस में connected है, और so as to form a number of feeding connection, okay, among different organism of a biotic community। okay, so it consists of many food chain as it is seen that grazing food chain is connected to detritus food chain at some level। इसमें ये है कि grazing food chain जो है वो detritus food chain से connected होगी, कुछ trophic level जो है उनसे connected होंगे। therefore the naturally interconnected food chain constitute a food web। now we'll see the different examples of food web। okay, are you able to see this picture? Yes girls, please tell me picture is visible। Yes, ma'am. okay, so Yes, just ma'am. हाँ, इसमें अब काउंट करो, यू हैव टू काउंट कि हाउ मेनी फूड चेन्स आर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फूड चेन, फूड वेब। ओके, सो नाउ यू हैव टू काउंट कि इसमें काउंट करके बताओ कि हाउ मेनी फूड वेब्स, फूड चेन्स आर देयर इन दिस फूड वेब। कितने फीडिंग कनेक्शंस हैं, कितने फूड चेन्स प्रेजेंट हैं इस फूड वेब में? काउंट फास्ट। Ma'am, 3. 3 नो, 3 हैं बट ज्यादा भी हैं, 5 आर देयर और 6 आर देयर और 4 आर देयर, just tell me। okay, I'm just telling you 5 or 6, 5 है या 6 है, just count it। Ma'am, 5. yes, 5। Yes, ma'am, 5. हाँ, 5 food chains are there। okay, first one is the grass, grasshopper, grasshopper से सीधे hawk। okay, second you are having the grass, grasshopper, lizard, and lizard से सीधे hawk, that is the second। third, grass, rabbit, from the rabbit directly hawk। okay, rabbit is eaten by the hawk। then fourth one, you're having the grass is eaten by the mouse and mouse is directly eaten by the hawk। and fifth is the grass is eaten by the mouse, mouse is eaten by the snake and snake is then eaten by the hawk। okay, so 5 food chains are there in this simple food web। okay, so food web is a number of food network of food chain which become interconnected, जो various, देखो यहाँ पे various trophic levels पे वो connected है। ओके, सो नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शन बना रहे हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, सो अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फूड चेन? उसने क्या है, in an ecosystem no food chain is independent and the linear arrangement of food chain hardly occurs। उसने कहा है कि
कोई भी फूड चेन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, सिंपल नहीं होती, क्योंकि हमेशा जो फूड चेन्स हैं वो फूड वेब बनाती हैं. इट इज फॉर्म बाय इंटरलिंकिंग. ओके, सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फूड चेन इट इज फॉर्म बाय इंटरलिंकिंग ऑफ ए नंबर ऑफ फूड चेन. Food chain also help in checking the overpopulation of highly fecundative species of animals and plants. जिनकी overpopulation है, जिनकी ज़्यादा population है, तो उनको भी check करती है. उसने क्या है, of animal and plant. Each species of any ecosystem is kept under some sort of natural check so that the system may remain balanced. Okay, तो उसने कहा हर एक system, हर एक species को दूसरी species खाती है, इसलिए उसने कहा each species of an ecosystem is kept under some sort of natural check. Natural check का मतलब कि उसको कोई और खा रहा है, अदरवाइज उसकी पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी अगर किसी स्पीसीज का नेचुरल चेक नहीं है तो. ओके, सो दैट द सिस्टम मे रिमेन बैलेंस्ड. एंड फूड वेब जो है जनरली फॉर्म ऑफ 3 टाइप ऑफ फूड चेन्स. एक फूड वेब में 3 टाइप की फूड चेन हो सकती हैं, कैन बी पॉसिबल. फर्स्ट वन इज द प्रेडेटरी फूड चेन दैट स्टार्ट्स, उसने कहा स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस. जो प्लांट से स्टार्ट होती है उसमें साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होती है, जैसे पैरासिटिक चेन्स हैं, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस व्हाइल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस. देन सेप्रोफिटिक, फर्स्ट वन इज द प्रेडेटरी चेन्स. प्रेडेटरी चेन्स हैं जो उसमें स्टार्ट्स फ्रॉम प्लांट. सेकेंड वन इज द पैरासिटिक चेन्स एंड थर्ड वन इज द सेप्रोफिटिक चेन. ओके, सेप्रोफिटिक चेन्स जो है वो स्टार्ट होती है, जो आपको पता है प्रेडेटरी जो है प्लांट से स्टार्ट होगी, पैरासिटिक जो है वो उसका साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें डिक्रीज होता है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज होगा. and then you're having the saprophytic chains. Okay, these are the different type of food chains that forms the food web. Okay, so and complexity of any food web depend upon the diversity of an ecosystem. किस कौन सी जो फूड चेन है, कोई भी फूड चेन है, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है that depend on the diversity of an ecosystem, diversity of organism in an ecosystem. And diversity in turn depend upon the alternative pathway of food अवेलेबिलिटी. जितनी अल्टरनेटिव पाथवेज हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि अल्टरनेटिव पाथवे हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए. हॉक जो है लिजर्ड को भी खा सकता है, हॉक स्नेक को भी खा सकता है, हॉक रैबिट को भी. ओके, सो दीज आर द अल्टरनेटिव पाथवे. तो उसने कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी फूड वेब डिपेंड अपॉन द डाइवर्सिटी. उस इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी पे डिपेंड करता है, और डाइवर्सिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, अल्टरनेटिव पाथवे. अगर एक ही पाथवे है खाने का तो डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म कम होंगे, डाइवर्सिटी लेस होगी. बट अगर ज़्यादा अल्टरनेटिव पाथवे हैं तो डेफिनेटली डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होगी. ओके, एंड फूड वेब्स ऑपरेट ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. फूड वेब लैंड पे भी हो सकते हैं, दे कैन ऑपरेट in the land as well. Okay, so this is the simplest type of food web. Then this is the complex type of food web. Okay, this you have to learn. ये आपकी complex type की food chain food web है, and it is present in a pond. A food web of a pond is formed by interlinking of a number of chain. Okay, so this is a pond ecosystem. जो आपने पीछे देखी that is a grassland ecosystem में food web है. Okay, and you have to learn about the different type of food chain like grassland ecosystem, pond ecosystem में है, aquatic ecosystem में है. Okay, यहाँ पे भी जो फूड वेब आपने पहले देखी that food web in a grassland, ये फूड वेब आपकी पोंड में है. सो यू कैन सी कि 7 टाइप ऑफ फूड चेन्स आर प्रेजेंट इन दिस फूड वेब. ओके, दिस यू हैव टू लर्न. और ये स्टार्ट है डायटम्स, डेस्मेट्स एंड एल्गी से. ओके, फर्स्ट इसमें है स्मॉल वाटर इंसेक्ट्स. ओके, दैट इज इटन बाय द वाटर बीटल. देन लार्ज फिश. सेकेंड जो फूड चेन है पैरामीशियम वाटर फ्लीज, दैट इज इटन बाय द स्मॉल वाटर इंसेक्ट्स. देन वाटर बीटल्स एंड लार्ज फिश. देन थर्ड जो है, और फूड चेन जो है वो क्या होती जा रही है, सिंपलेस्ट होती जा रही है. कॉम्प्लेक्स भी है और सिंपलेस्ट फूड चेन भी है इस फूड चेन के अंदर. सो टोटल हाउ मेनी फूड चेन्स यू कैन सी इन दिस फूड वेब, 7. ओके, और जैसे आपकी 6th वाली है प्रॉन इज इटन बाय द स्मॉल फिश इज इटन बाय द लार्ज फिश, एंड प्रॉन इज डायरेक्टली इटन बाय द लार्ज फिश. सो दीज आर दिस फूड चेन. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड वेब and it is present in a pond and it consists of 7 different type of food chains. Okay, but इसका जो main है, first जो है diatoms, desmids and algae. These are the different type of algae. Okay, so this is all about the food chain and food web. Now try to learn more and more examples of food chain and food web
in different type of ecosystem, grassland, forest ecosystem, pond ecosystem. Okay, then you are having the 10% law of energy. उसने क्या है, behavior of energy in ecosystem is called energy flow. Okay, behavior of energy in an ecosystem is called energy flow due to unidirectional flow of energy. So there is a one way street along which the energy flows. This is important कि one way street along which the energy flows. The study of energy transfer between different tropic level is called bioenergetics. Okay, the study of energy transfer, जो energy transfer होती है between different tropic levels, उसको बोलते हो bioenergetics. Okay, and 10% law जो है, that was given by Lindman in the year 1942. And according to this law, in each step of food chain, when food energy is transferred from one tropic level to the next tropic level, some energy is lost as heat and only 10% of the energy is transferred to the next level. Okay, तो उसने कहा सम एनर्जी जो है लॉस्ट होती है हीट, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 80 to 90% जो एनर्जी लॉस्ट होती है एज अ हीट एंड ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल. So this is the 10% law. उसने कहा secondary productivity tends to be about 10% at the herbivore level. Okay, उसने कहा although efficiency may be higher as 20% at the carnivore level. मीन्स सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है, जैसे आपने प्रोडक्टिविटी का टॉपिक पढ़ा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कितनी है, टेंड्स टू बी 10% एट द हर्बीवोर लेवल. And this law, this 10% law governing the retaining of only 10% of chemical energy at each tropic level. Okay, तो retain जो कर रहा है हर एक tropic level वो कितनी energy कर रहा है, that is the 10%. So that's why law is called as the 10%. Okay, and it was proposed by Lindman in the year 1942. जैसे suppose example is there, like producers के पास 100 calories k kilo calories energy है, तो herbivore is having the 10k calories of energy. Carnivores के पास 1k calories होगी और second carnivores के पास 0.1. Okay, so if producer is having the 100 kilo calories होंगी तो herbivores के पास 10 kilo calories होंगी. Carnivores के पास 1 and carnivore second के पास 0.1. Okay, and उसने क्या है, रिगार्डिंग द एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी, डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी एंड रिटर्न ऑफ रेडिएंट एनर्जी टू सन टू नॉन लिविंग सिस्टम एज हीट एंड नॉट एज लाइट. और जो रिटर्न होती है एटमॉस्फेयर में एनर्जी वापस, वो एज हीट होती है, नॉट एज लाइट. Okay, so this is all about the energy flow and in ecosystem. You can write number of examples of energy flow, कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू एनर्जी, वो तो 10% ही है, लेकिन एग्जाम्पल आप कैसे भी लेके कर सकते हो अबाउट द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. ओके, बट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि एनर्जी फ्लो जो है डेट इज अ वन वे स्ट्रीट एंड स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, that term is called as the bioenergetics. Okay, okay, then you are having the ecological pyramids. Okay, तो उसने कहा an ecological pyramid is a graphical representation of an ecological parameter like number or biomass or accumulated energy at different tropic level in a food chain in an ecosystem. Okay, तो उसने कहा इकोलॉजिकल पिरामिड मीन्स कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर लाइक नंबर और बायोमास और एक्यूमुलेटेड एनर्जी एट, तीन चीज़ें हैं इसमें, नंबर और बायोमास और एक्यूमुलेटेड एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन इन एन इकोसिस्टम. ओके, सो अकॉर्डिंगली वी आर हैविंग द थ्री टाइप ऑफ फूड चेन and the idea of ecological pyramid was developed by Charles Elton. Okay, and that's why it is also called as the Eltonian pyramids. Okay, ecological pyramid जो थे, जो इसका आइडिया था उसने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप बाय चार्ल्स एल्टॉन, इसलिए इसको एल्टोलियन पिरामिड भी बोलते हैं. सो रिमेंबर दिस थिंग कि इकोलॉजिकल पिरामिड इज आल्सो कॉल्ड एज द एल्टोलियन पिरामिड्स. एंड इकोलॉजिकल पिरामिड जो हैं तीन टाइप के हो सकते हैं. ओके, मे बी अपराइट. ओके, थ्री टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, बट जो पिरामिड है डेट कैन बी ऑफ थ्री टाइप.
कैन बी अपराइट, अपराइट हो सकते हैं, मीन्स टेपरिंग टूवर्ड्स द टिप. जब आप पिरामिड बनाओगे कैन बी अपराइट, टेपरिंग टूवर्ड्स द टिप. या फिर इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, वाइडन टूवर्ड्स द टिप, और स्पिंडल शेप, ब्रॉडर इन द मिडल एंड नैरो अबव एंड बिलो. Okay, so that we will see in the examples. The different types of, जो आप पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, उसमें हम 3 टाइप के पिरामिड्स देखेंगे. जो शेप होती है पिरामिड की कैन बी ऑफ 3 टाइप. इकोलॉजिकल पिरामिड तो 3 टाइप का है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. बट इसमें जो पिरामिड्स बनते हैं वो भी 3 टाइप के हैं. एक है अपराइट पिरामिड जो होता है टेपरिंग टुवर्ड्स द टिप, and one is inverted, widened towards the tip. Okay, and one is spindle shape, broader in the middle and narrow above and below. Okay, so हम देख that we will see कि कौन कौन सी टाइप में कौन कौन सा पिरामिड बनेगा. ओके, एंड उसने कहा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोड्यूसर इन द कम्युनिटी, वो डिपेंड करेगा, जो पिरामिड बनेंगे वो डिपेंड करेंगे साइज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ अ कम्युनिटी. ओके, so this is all about the ecological pyramid, the types of ecological pyramid that we will study in the next class. Okay, so we are having 3 type of ecological pyramid. We'll see the 3 type of ecological pyramids and their examples in different type of ecosystem as well. Okay, so yes, it is clear. Yes, please tell me any problem is there, anything you want to ask. Okay, so this is all about your chapter है जो ecosystem. Okay, that is an important chapter. Arpita, don't worry, I will send you the message after the class. Okay, just don't worry about it, I will send you the message about the project. Okay, so anything you want to ask regarding the class, please tell me. Yes, any question is there? Will you please give me the response? Ma'am, it's clear. Okay, so this is very simple, but just try to Ma'am, learn. it's clear. हाँ, just try to learn more and more examples of food chain. ज़्यादा से ज़्यादा food chain की examples जो है वो learn करो. हर एक उसने क्या है, हर एक में, pond ecosystem में, forest ecosystem में, parasitic food chain क्या है, tree ecosystem. Okay, tree ecosystem भी होता है. Okay, so different type के जो ecosystems हैं उनमें food chains को learn करने की कोशिश करो. Okay, so can I end the session now? Yes, please tell me, can I end the session now? Yes, ma'am. Okay.